What the fuck did I just watch? Yeah. So he's flexing his chest and clenching his cheeks while he's gonna jump. Whoa, whoa, whoa! अबे! What kind of fight? अबे ये fist fight करने दे गन वालों से. ये चुपमारी के मूवी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं. ये झांटे से मूवी बनेगी. Last week I watched Baghi 4 with my friends. A lot of N bombs were thrown at this scene. यही looking at me like it's my fault. मैंने इस सीन पे क्लियर बोला था. इस दल्ले ने बिना सोचे नशे में 2 बंदों को गोली मारी अभी अभी. Why the fuck is he holding back for him? Oh अच्छा मतलब he is Baghi 4. I understand aura farming and अबे भाई रुक जा. He killed 2 fuckers just now. Why the fuck are you pointing the gun at yourself? Baghi 4 is retarded, but it's so damn retarded that it's fun to watch. Half of this movie was about people trying to kill the main character early on, and main character भी technically चूक गई है. मतलब अबे तू खेत के थ्रू होते हुए वापस खेत में जाने की ट्राई कर रहा है क्या? Why the hell are you driving horizontally on the screen? Okay. मतलब यही होना था. मतलब quick, you're the main actress, you're about to meet the love of your life, and 3, 2, 1, action. Maybe this will help. अबे यार इसको मारने की तैयारी करो कोई. पागल है क्या? इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ मेरे को लगा डायरेक्टर ने सही में इस बंदे को मेंटल डिसेबिलिटी दे दिया इस मूवी में कि आज दुग्गल साहब चूतिया है. ये बंदा नेवी में होके नेवी की ड्रेस पहन के सड़क पे ऑन फुट गंजेड़ी को चेज कर रहा था. यार तुम्हारे सामने से गंजेड़ी भाग रहा था और तुम रील्स बनाने के चक्कर में थे. नेक्स्ट सैलरी आते ही तुम्हारी लाइफलाइन तुम्हें वापस मिल जाएगी. तब तक मेरा फोन रख लो. अबे पासवर्ड तो दे. अबे भाई पासवर्ड तो दे भाई. कहां जा रहा है भाई? This dude is so fucking stupid in this movie that there was an actual scene fully focused on an easily accessible bike to start the chase, and ये बंदा उसे छोड़ के पैदल गाड़ी के पीछे भागने लगा. Yeah, we have to kill him as well. ये डॉक्टर खुली आंख के बंदे को D5 दिए जा रहा था like it's Battlefield 6 or something. आंखें खुली हुई हैं उसकी भाई. He's almost dead. Your brother died. We tried our best. I'm not lying at all. We did try our best. To kill him, yeah. Look, here's the thing. I want to talk about the movie critically. अबे भाई एक second रुक जा. I'm trying to have a conversation. Stop trying to kill someone for a second. Tiger, focus on. तू उसे नीचे खींच रहा है दल्ले. You're killing him. Fine. You're okay. You're safe now. It's okay. You're gonna be fine now. Did he just track a sniper bullet point blank? Yeah, dude, you're perfectly safe. He can see bullets. You're not dying by his side. What? पॉटी आ रही मेरे को. देखो मेरे को कोई शौक नहीं है बॉलीवुड मूवीज देखने का, स्पेशली दीज मनी लॉन्ड्रिंग स्लॉप मूवीज. बागी 1 was ass and yet we are getting Baghi 4. Who the fuck wants it? No one. I mean, it's a good tax write-off. I understand that. But a tax write-off should not be referenced off of Animal. And it's not a light reference either. It is a major करो चोरी बैंड चो. क्या ही फर्क पड़ता है? टाइगर की तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं है मार्केट में. टाइप रेफरेंस. They picked the worst cast possible to play the most intense roles that there has been in years. रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं एनिमल की. ओके बागी तो चूतिया. I don't know who she is and I don't give a fuck now. But I know who she is. And अब बहन गुस्सा आ रहा है कि why the fuck do I have to suffer through this? माँ का मकोड़ा बहन का पूछा माँ की गुत्थी जवानी चवन्नी हो गई है. Who the hell was writing these dialogues and why the hell was she targeted for this? इसने ऐसा क्या किया है कि भाई इसको मेन एक्ट्रेस बना दिया? She was literally sleeping half the movie. Maybe she did the same thing in real life to get the... It's a joke. मतलब मैंने तो कुछ सीरियसली बोला. I get it. Animal was a success. तो तुम्हें एनिमल की कॉपी करनी थी ना. संजय दत्त with long hairs and a primal anger. मॉब्स को ये मास्क दे दिए to copy the animal hotel scene. भैंड उस मूवी का आधे मेन एक्ट्रेस उठा लिए to make it less obvious. बी प्राक को भी नहीं छोड़ा. वो भी गाने गा रहा था एंट्री पे. You did all that for what? For what? Point blank shotgun shell shot. दीवार पे मिसाइल टकराई है जाके. Second point blank shotgun shell shot. It's not even a shotgun shell. It's a 7mm bullet. Third point blank shotgun shell shot. Shot even looks like a shotgun shell. Try saying that 3 times in a row. He fucking missed. Point blank. Is this Helen Keller? Are these disabled people under the mask? मतलब पूरा बजट साला बकचोदी में खत्म हो गया कि तुमने पेशेंट्स को हायर कर लिया to fight tiger. And I know. Okay, action Indian movies में हमेशा से over the top रहा है. I know. It makes sense कि they suck at executing these shots. But this same movie have this sequence. And इस shot में सोनम बाजवा was moving like the prime daredevil or some shit from the
Marvel era. This same movie has this sequence where this lady जिस पे basic walking shots nail नहीं हो रहे, वो बंदी ऐसे move कर रही थी जैसे the rent is due tomorrow. Calm down, Harley Quinn. अभी संजय दत्त को भी animal shots copy करने हो, okay? Calm down. And how did you fuck up all the shots specifically involving the main character? बंदा लड़ने जाता है, बैंड जो अस्थियों में घुस जाता है. Even the first shot itself was pointless, completely pointless. Jacked guy in red robe with sunglasses at night tries to sabotage a funeral with a parade full of dressed up freaks. And I know पूरी कॉम्बैट चुदी हुई है इस पॉइंट के बाद. वो शान प्राशर ने भी बोला है. I'm not gonna focus on that. What the fuck was this? बार बार रात ये आए, बार बार हम ये गाए, तुम रहो इनके साथ, मैं बस इतना चाहूं. The movie just began? Or the fuck did we run out of dialogue budget this early? Do you want me to tell you the entire story जैसे पीजे बताता है अपने रिव्यूज में? First things first, previous movies does not matter at all. नहीं देखी तो देखना भी मत. बागी 4 भाई बंदी को घुमा रहे होते हैं गाड़ी में that he fell in love with because she was a doctor. Florence Nightingale effect from Joker. And Joker से याद आया, this lady have a doppelganger conveniently existing in the same damn town. ये दोनों लाड़ से related नहीं है by the way. Just a big coincidence, the evil twin is like Harley Quinn. So conveniently again the lover is like Joker, but क्योंकि there was a psychopath like Joker, Ranveer Kapoor in Animal, so we have to think deeply ना. We have to construct a brand new character from scratch and give it a backstory and all. Fuck that. छापो सब छाप दो बहन को सब कुछ. She dies, the evil one, not the good one, and then she dies, the good one, not the evil one. But then turns out she didn't die and was kidnapped so that the villain can marry her against her consent. But then she refuses and villain बोलता है to that ठीक है क्योंकि she didn't give consent, तो kidnap क्यों किया बहनचोद? The lady goes, मैं ना शर्त रखती हूँ अगर बागी 4 मेरे को भूल गया ना तो मैं तुमसे voluntarily शादी कर लूंगी. क्या मतलब मैं शादी कर लूंगी? He kidnapped you. Did you forget against your consent? You told him that अरे भाई बागी 4 मेरे को भूल गया तो मैं ब्याह कर लूंगी. He'll probably kill him because of that and lie about him to you कि बाड़ तो भूल गया. Meanwhile he's dead in a ditch. You gave him the only way using which he can legally marry you. Feels like you want to marry him secretly. I mean I don't blame you. ये बाड़ काउंट ड्रैकुला जैसा मैंशन, सीजर्स पैलेस जैसा बेडरूम, पर्सनल गून्स एंड अबरार का भाई हायर कर लिया भाई ने. आई विल कम अप विद बुलशिट टू मैरी हिम. मेक सेंस कि ये भी कर रही है. ये बंदी अपनी इच्छा से ऑडियंस रिक्वेस्ट करती है बागी 4 भाई के साथ क्योंकि द विलन लाइड अबाउट हिम फॉर गेटिंग हर एंड बागी 4 shows up voluntarily to his own slaughter because the plot armor will protect him na. He knows as well. It's fine, everything is fine, nothing major. Now remember this, जो सीन अब मैं प्ले करूंगा ना वो सीन उस बंदी और उस बंदे के बीच में है that were willing to give their lives for each other. And go. I believe in my love. I believe in Ronnie. मेरा Ronnie कभी ऐसा कुछ. It's true. हाँ अबे पागल औरत, इतने में ही प्यार पे मूत दिया. मतलब अबे सुन तो भाई. This lady is so fucked in her head कि ये मूवी के एंड में उस बंदे के पीछे छुप जाती है. While Baghi 4 was literally fighting a billion dudes just to get to her. He's trying to get to you to save you from this demon. Hello? तो उसके पीछे ऐसे छुपी हुई है जैसे Baghi 4 तेरे को मारने आ रहा है. Are you wishing secretly in this scene कि Baghi 4 की मौत हो जाए जिससे कि you can legally marry this dude with the big fat fucking mansion? You probably are. हाँ? अबे क्या मतलब? You know what? The movie ends there. Let's come back to the untied points of this movie, जो कि mostly हैं, but couple of them I left for the end. This police dude just randomly forms a bro bond with Baghi 4. ये बंदा constantly assault कर रहा है पब्लिक को. ये जहां जाता है वहां लोगों की मौत हो जाती है. And the end goes like, मैंने आस्तीन का कुत्ता पाला है. brother, the way you downgraded from Animal to this piece of shit franchise, people might start using the same remarks for you. Now some honorable mentions before I start puking all over my screen. Since Baghi 4 को शमशान में और अफाम करना था, बहन तुम शमशान का भी रोल ले रहे हो. पंडित चिता के सेंटर पे बैठा था with kerosene on the wood perhaps to conveniently trap the lady. This fucker looks AI generated as hell. You cannot convince me. But साले तेरे पे गन है ना, तू दीवार के पीछे छुप के सोनम बाजवा को लड़ते हुए देख रहा है. I mean I don't blame him. Look at that. But साले take the shot. This movie have no concept of convenient ट्रांजिट. पहले गाड़ी चला रहा था तो बेंच गाड़ी को ट्रक में उड़ा दिया. स्टेशन के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर बची कुछ गाड़ियां ऑरा फार्मिंग के लिए हवा में उड़ा दी. तो अब बागी 4 पूरी मूवी में ऑन फुट भागते हुए दिखाई दे रहा है. बस. You know what? This is too much. I'm done with this piece of shit franchise. Bye.